Magnification. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ लेट्स से ये ओरिजिनल साइज है और आप उसको enlarged करके व्यू करते हैं, that object has been magnified. Okay? It's actually the ratio of how enlarged your object is. आपने object को कितने times enlarge किया, that is magnification. Let's say this block has been enlarged by, let's say, so 2 times. तो इसकी magnification 2 है. और हम कैसे find करते हैं इसको? हम ratio find करते हैं. Ratio is just a relationship. And whenever you see ratio, we're dividing two things, like one thing by another. Firstly, let me write that down. It's the ratio of the image height and the object height. So magnification is a ratio. Whenever you see the word ratio, we're essentially dividing one thing by another, or हम उनका relationship find कर रहे होता है. So I'm just gonna write it down here. That magnification is equal to the same thing I wrote here, image height and object height. Like that. And you should know how to rearrange this formula. आपको magnification given हो सकती है और object की height given हो सकती है, and they might ask you image height या फिर image का size. तो आपने इसको rearrange करना है और अपना image का size find out कर लेना. Now, magnification depends on two things. ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना डिस्टेंस है, and of course the power of your lens as well. जब भी आपके पास कोई रेशियो होगा तो रेशियो का यूनिट नहीं होता. उसकी वजह ये होती है कि लेट्स से अगर इमेज हाइट दोनों हाइट्स हैं, ऊपर वाला ये जो न्यूमरेटर है उसका यूनिट भी लेंथ का होगा, लेट्स से मीटर्स, और द डिनोमिनेटर इज आल्सो हाइट, इसका यूनिट भी मीटर्स में होगा. तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो रेशियो है या जो मैग्निफिकेशन है इस केस में इन द एंड डिमेंशन लेस होती है या फिर यूनिट लेस होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता. So let me flag that here. It's a ratio, so it has no unit. मैम, Yes, आपने ये डिपेंड्स ऑन का फर्स्ट पॉइंट कैसे क्या लिखा है? it depends on the distance of the object from the lens. कि आपका ऑब्जेक्ट लेंस से कितने डिस्टेंस पर है. आप उसको मैम
अगर ज्यादा करीब करते हैं लेंस के तो वो ज्यादा मैग्नीफाई होता है। मैम तो एंड में तो मैग्नीफाई ही होता है। मैग्निफिकेशन नंबर है ना, एक 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है या फिर 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज सेइंग। यस मैम। Okay, for example, this diagram is actually the one for magnifying glasses. Here, if you place this object even closer to the lens, your image banegi will be taller than this as well. So the closer you bring your image to the lens, the more magnified, sorry, the closer you bring the object to the lens, the more magnified the image will be. Okay, यस मैम। okay. Next point is that अगर आपकी magnification ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि इमेज का साइज, सो आई एम यूजिंग अ ग्रेटर साइन हियर एंड 1, इसका मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, so it means the image is magnified. How am I saying that? अगर आप इसको एक फ्रैक्शन को भी कंसिडर करें जिसका एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो आंसर ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, if you have one, I'll give you different examples. If you have, let's say, 2 by 4, so 2 1 times 2 2 times 0.5. It's not greater than 1. अगर आपके पास 4 by 2 हो, तो then you will get 2. It's greater than 1. And you see the numerator was greater than the denominator. It means that the image is larger than the object size. So it has been magnified. The point here is whenever you see the magnification to be greater than 1, that means that the image is magnified. It means magnified image. और अगर आपके पास मैग्निफिकेशन 1 के एग्जैक्ट इक्वल है, इसका मतलब है कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। ऑब्जेक्ट size is equal to image size. Lastly, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है 0.5, इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ी है। What does that mean? That the image is diminished. Diminished. मैम Yes? इस केस में ऑब्जेक्ट की लेंथ लेंथ से कम है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है। Sorry, can you repeat that? मैम इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट कम है और ऑब्जेक्ट की लेंथ लेंथ से ज्यादा है। We're talking about the overall size of the object. It doesn't matter it's a height or length. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, let's say 3D है ये ऑब्जेक्ट, इसकी ये लेंथ होगी, ये उसकी हाइट होगी और ये उसकी विड्थ होगी। जब उसने मैग्नीफाई होना है तो उसकी सब प्रोपोर्शंस ने इक्वली मैग्नीफाई होना है। ऑब्जेक्ट हम सिर्फ यहाँ पे हाइट कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इट डजंट मैटर आप हाइट ले रहे हैं या लेंथ ले रहे हैं, हर डिमेंशन उसका इक्वली जूम इन होगा। इज दैट व्हाट यू वर आस्किंग? मैम इन दोनों फ्रैक्शंस में से किसी भी फ्रैक्शन का लेंथ लिंक नहीं है।
इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों में से कहीं पे भी लेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अभी हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप लेंथ कह रहे हैं या लेंस कह रहे हैं? लेंस। Can you, okay, I thought you were saying length. Can you repeat your question? मैम, ये जो मैग्निफिकेशन की दोनों फ्रैक्शंस है, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, मैम इसके अंदर हम लेंस की बात नहीं ना करें, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। Yes, that's right. जी सही है। Okay. Now मैम, yes. ये वाली जो लास्ट सेकंड और थर्ड आपने पॉइंट लिखा है, इसके अंदर हमारी मैग्निफिकेशन जीरो होगी सेकंड में। Magnification 1 है. Magnification is equal to 1. मैम तब जीरो कब होगी? 0 नहीं होगी, probably. Yes. मैम वैसे ये जीरो नहीं Magnification, होनी चाहिए। no, it can't be 0. Magnification heights को divide कर रहे हैं आप. 0 कैसे आ सकता है आंसर डिविजन से? 0 तो तब आएगा कि आपकी इमेज की कोई हाइट ही ना हो. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0. और ये तो हो नहीं सकता कि आपकी इमेज की कोई हाइट ही ना हो, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर. यस मैम। Is that clear now? यस। Okay, perfect. Any other question related to this? नो मैम। Okay, now let's look at uses of lenses. पहला तो we just discussed it above, magnifying glass. I hope that's the right spellings. Glass. And its ray diagram can look like this or this. Okay? Basically, no. Sorry, its ray diagram looks like this. मैम आपने क्या कहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास की रे डायग्राम ऐसी दिखती है. मैम वो तो ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता कि वो किधर है। Hmm, अच्छा, बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर इज कि मैग्नीफाइंग ग्लास में आप एक फोकल सॉरी कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं. When you bring the object closer to the magnifying glass, it's then that your object is magnified. जब वो थोड़ा ज्यादा दूर होता है, it's not magnified. So your magnifying glass has a it's converging shape or converging lens. And of course, it depends on the distance of object from the lens. We've already discussed that. But here I'm saying magnifying glass because of the lens. Magnifying glass में converging lens होता है. और जब आप उसको करीब लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को लेंस से, तब आपको वो मैग्निफाइड नजर आता है. So it doesn't only depend on the distance, it also depends on the type of lens you're using. यस मैम। Okay? And in this case, your image is virtual, enlarged, and upright. And remember that when you're using a magnifying glass, तो आपका object हमेशा lens के close होना चाहिए, as you just mentioned. Only then the object will be magnified. So is that clear? यस मैम। Okay. Next, we're gonna look at another use of
lenses, which is correcting sight. जो glasses या spectacles पहनते हैं लोग. Correcting sight. मैम हमारे सिलेबस में फार साइटनेस तो ये नियर साइटनेस है. Yes, we're just going to look into that. I'm actually trying to see if there is a diagram available. Hmm. Okay, I am not sure. Let's just continue for now. So there are two types of corrections that we can make. We can make corrections for short-sightedness and long-sightedness. And I'll explain what both these things are. So we have मैम ये हम ह्यूमन आई में बात कर रहे हैं. yes. Okay. अब short-sightedness and long-sightedness अगर हम उर्दू में कहें तो short-sightedness होता है कि दूर की नज़र कमज़ोर है और long-sightedness होता है कि करीब की नज़र कमज़ोर है. Okay? यस मैम. So what is short-sightedness? It's can't see things that are far away clearly. See things that far away, and long-sightedness is when people can't see things that are close by. मैम ये तो ऑपोजिट है एक दूसरे के, नाम से तो ऑपोजिट है. Yes, that's what I'm saying. So the oh, what like ये short दूर के लिए और long करीब के लिए ये कह रहे हैं आप? यस मैम. I will explain one more point, and that will make much more sense for the name. Let me explain everything first, and then we'll come back to the name. So what happens is that the people who are short-sighted, their eyes are a little too large. Let me actually see a diagram. Mm, okay, let's look at this one. Copy. Okay. मैम उसे अच्छा, माइफोबिया कहते हैं ना, वो कंडीशन जिसके अंदर आग भर जाती है हमारी. sorry. मैम उसे माइफोबिया, सॉरी, मायोपिया कहते हैं ना उस कंडीशन को जिसके अंदर हमारी आई लेंथ इंक्रीज कर जाती है. I am not sure. I'm not sure with the technical terms. ओके. Sorry about that. Okay.
So this is flipped actually. So I'll just keep the diagram to the side. And I'll write down names here. Okay. This is short-sightedness. And this is long-sightedness. Okay. अच्छा. अब short-sightedness में ये होता है कि the person has an eye that is a little too large. Okay. And what happens is that when the lens of the person's eye, when the lens refracts light, तो वो कन्वर्ज करनी होती है रेटिना पे. लेकिन क्योंकि उस पर्सन की आई इज लार्जर देन द इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज पहले बन जाती है और रेटिना पे नहीं बनती. ओके, सो द इमेज is formed before the retina. So, in other words, this focus point is in front of the retina. और हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? एक डाइवर्जिंग लेंस से, ताकि रेस थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाए यहाँ पे, और जब आपका फिर आई का जो लेंस है वो उसको रिफ्रैक्ट करेगा तो वो एग्जैक्ट रेटिना पे आकर converge करें and image is formed there. Whereas in long-sightedness, people who have this condition, their eyes are too small and the rays refract behind the retina. Okay? So how can we correct that? We can use converging lenses for that. So we'll converge the light a little bit by the artificial lens, and then the original or the natural lens of the person will refract light as well, and it will form or converge on the retina. मैम ये चीज नहीं समझ आ रही कि इसको हम ये जो लेंस हमने यूज किए हैं बाद में ये इसको करेक्ट किस तरह कर रहे हैं? इसको ऐसे करेक्ट करें कि हमारे नेचुरल लेंस ने भी कन्वर्ज करना है रेस को. अगर इमेज पहले बन रही है तो आप उसको डाइवर्ज करेंगे रेस को थोड़ा सा, और फिर आपका लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, तो आप सोचेंगे अब थोड़ी डाइवर्ज रेज आ रही हैं, तो उनको कन्वर्ज करने में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा. ओके, you can imagine this as two, okay, let's say आपके लेंस ने अगर दो रेज आ रही हैं, उनको इतना सा करना है डाइवर्ज इधर. सो आपके लेंस ने इतना ही डाइवर्ज करना है, और रेटिना जो है वो यहाँ पे है. तो व्हाट विल डू इज कि हम इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करवा देंगे इस तरह, ताकि अब जब वो कन्वर्ज करेंगी तो वो इधर आके कन्वर्ज करेंगी. यस मैम, अब समझ अगर आ गई. अगर रेस डाइवर्ज्ड है तो उनको कन्वर्ज करने के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम. मैम लेकिन बायो में तो मैंने पढ़ा था कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कभी भी नहीं यूज करते. कॉनकेव, सॉरी. Well, we're using it here now. I am not sure about what goes on in biology. I'm sorry. Yeah, okay. So is there any question about this? नो मैम. Okay. Let me write a few points here for reference. So मैम for short-sighted, yes. आपने ये जो कहा था कि जिस बंदे की आइज स्मॉल है या आइज लार्ज है, आपने आई बॉल की बात की थी, आपने लेंस की बात की थी? Eyeball यस मैम. is too large. And here, eyes are too small. Let me write down the points for this then. Max the light. Okay, so I'll just, I guess, keep these diagrams.
So I don't need to write much here. You can see कि यहाँ पर image like in front of the retina बनती है और आप diverging lens से इसको behind the like on the retina form करते हैं और यहाँ पर image behind the retina बनती है and then you correct it to form it on the retina. I hope that's clear, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. One last thing that I want to discuss here is dispersion of light. So the visible light या जो white light होती है जो हम देखते हैं, it's a mixture of all colors of the spectrum. So this is mixture of all colors of spectrum. Okay. और color क्या होता है? Color is essentially the difference in wavelength or frequency of objects. Okay? Color सिर्फ wavelength or frequency difference को कहते हैं हम. Okay? And light is a part of the EM spectrum, electromagnetic spectrum. And that spectrum is, what's it? Radio, micro, infrared, light, UV, X-rays, gamma rays. So this is your light. It's part of the electromagnetic spectrum. मैम ये कलर्स याद करने के लिए ये फ्रेज है. No, this is not for colors. ये आपके electromagnetic spectrum के लिए. Radio, micro, infrared, light, UV, X-rays, gamma rays. We're going to cover this in electromagnetism as well. Okay. Colors के लिए एक और है. Yes, colors के लिए है Roy G. Biff. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Yes? मैम आप एक दफा इसे रिपीट कर सकती हैं? इसको? नहीं मैम, ये जो आप शुरू से लिख रही हैं. अच्छा. We're discussing कि हमारे पास electromagnetic waves होती हैं जिसको हम इन सब waves का नाम एक common सा है electromagnetic spectrum. तो इसमें है radio, microwaves, infrared waves, visible light, UV rays, X-rays, gamma rays. तो light की हम बात करने लगे हैं अभी कि light कैसे disperse होती है अपने colors में. Okay? Light है क्या सबसे पहली बात? Light different colors का mixture है और हमें वो white नजर आती है. अगर आप एक prism से उस light को पास करवाएंगे तो वो light disperse होती है अपने colors में. आपको पूरा एक rainbow sequence नजर आएगा of these colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay? So let me talk about dispersion. In dispersion, if you pass the light through a prism, that light will refract into its spectrum, into this spectrum of this sequence. Let me try to draw it. मैम अगर आपके पास, yes. स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं हर like एक सीक्वेंस को कहते हैं. मैम रेनबो को नहीं कहते स्पेक्ट्रम? Not exactly. The spectrum is a general term that we use for sequences. For example, people who have autism,
उसकी different categories होती हैं. I hope I'm not saying something wrong here. I'm just trying to explain what I know. तो वो स्पेक्ट्रम पे होते हैं ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे कि उनको कितने लेवल की ऑटिज्म है. So spectrum is just, I guess, a sequence or combined category of people. मैम वो फ्लाइट्स नहीं होगा, लाइट Sorry, कलर्स? I'm not sure. यस मैम. Okay. So if you have a ray coming here, remember आप बिल्कुल 90 degrees पे रे को नहीं रखते, वो फिर सीधी पास हो जाती है. एक एंगल पे अगर आप रे इंसिडेंट करते हैं इस प्रिज्म पे, तो क्या होगा, ये रे स्प्लिट हो जाएगी अपने इन कलर्स में. I will only draw 1 to 2 colors. Let's say red, and I can draw yellow. Oh, sorry, this is orange. Red. Let's do yellow. We can do green and blue. Like that. And we'll continue this refraction even more. Red, yellow, green, and blue. Okay? So your rays are, like your light is split into 7 colors. I've only drawn 4. Basically, indigo and violet are the same color, even blue is similar to that. But we have 7 colors here. Let's just keep it that way for now. And then, what you should remember is the relationship of these colors with wavelengths and frequency. हमने पढ़ा हुआ wavelength क्या होती है और frequency क्या होती है. I hope you guys remember that. Wavelength is just the length of a wave, और frequency होती है कि 1 सेकंड में कितनी waves पास करती हैं एक single point से. Right? Yes, ma'am. कि wavelength जो है वो longest है. So basically जब हम red से violet तक जाते हैं, sorry, इस sequence में जाते हैं तो wavelength decrease होती है. Like red की सबसे ज्यादा wavelength है, फिर orange की उससे कम, yellow की उससे कम, blah blah blah, और violet की सबसे कम. So इस right side पे अगर हम जाएंगे तो decreasing wavelengths. मैम इसकी रीजन क्या है? Nature. Yes. Nature. Okay. मैम Just इसीलिए yes. रेड लाइट अगर हम किसी प्लांट पे इंट्रोड्यूस कराएं तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है. I didn't know that. Okay. Yeah. I don't think that's possible. मैम Is it? हमारे सिलेबस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट पे, और सबसे ज्यादा और मेजर ये करते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस में हो रही है, और सबसे ज्यादा Oh. इवन के नॉर्मल लाइट में से सबसे ज्यादा रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है. Okay, that's interesting. I'm just thinking about one thing. I was thinking that, okay, let me complete my point and then I'll come back to this. I feel like it has to do with the pigment. Because if we talk about energy, then decreasing wavelength means increasing frequency. Wait, I'll write that down first. Increasing frequency. And we have a relationship in physics, which is energy is equal to Planck's constant into frequency. यानी कि energy directly proportional है frequency के. Increasing frequency का मतलब है increasing energy.
Energy, like that. तो जब आप रेड से वायलेट में जाते हैं तो इंक्रीज होती है एनर्जी. सो टेक्निकली वायलेट लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होना चाहिए if it was related to energy. But I'm sure because photosynthesis is the formation of whatever food or carbs by chloroplast, which has chlorophyll, I guess, or whatever, then it probably is due to the chlorophyll. कि chlorophyll जो है वो किस light को सबसे ज्यादा absorb करता है. It has to be that reason because energy and this equation says otherwise. So my conclusion will be chlorophyll absorption. It probably absorbs light best in the red, and yeah, red or I don't know what other wavelengths. तो मैम Okay, मतलब sure. इसका वेवलेंथ से लिंक नहीं है. I don't think so. It has to do something with chlorophyll. मैम Yes. ये आपने एनर्जी इंक्रीज क्यों लिखा है? रेड से अगर आप राइट साइड पे जाएं तो रेड में सबसे कम एनर्जी है, वायलेट में सबसे ज्यादा एनर्जी है. सो इस एरो की डायरेक्शन में जाएं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैम मैं वही पूछ रहा हूँ कि इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. यस मैम. एंड फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल. Okay. I think that's it for today. Okay. All right. So we've covered, let me review what we've covered. We have covered what magnification is. It's the ratio of the image size and the object size. And it depends on the distance of object from the lens and the power of the lens. It does not have a unit because it's a ratio. If magnification, let me remove this sign, looks like a negative sign. But if magnification is greater than 1, it's a zoomed in image or magnified image. If it's equal to 1, then the object size is equal to the image size. And if it's less than 1, then the the image is diminished. Okay? मैम This is how ये the, डिमिनिश्ड में वो जूम आउट हुआ है ना? yes, you can say that. So this is how the lens diagram will look like. And we have the second, this is how the lens diagram for a magnifying glass will look like. And the second use of lenses is to correct sight in like glasses. So we have two types of problems. We have short-sightedness, we have long-sightedness. Short-sightedness is when the rays converge in front of the retina. And long-sightedness is when they converge behind the retina. We can use diverging lenses for short-sightedness and converging lenses for long-sightedness to correct them. Then we did dispersion of light. We studied that light is one of the components of the electromagnetic spectrum, and it's a mixture of different colors, and colors depend on frequency and wavelength. Red has the highest wavelength. Let me actually write that down. Highest wavelength, it means it has the smallest frequency and least amount of energy. And for violet, this right here has the highest frequency, lowest so this one has the smallest wavelength, highest frequency, and highest energy. That means when you go from left to right in this, you see decreasing wavelength, increasing frequency, and increasing energy. And this is an important formula, E equals HF.
And that tells us that energy is directly proportional to frequency.